ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಸಮಸ್ತಜನಕಲ್ಯಾಣೇ ನಿರತಂ ಕರುಣಾಮಯಂ ನಮಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಂ ದೇವಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರಂ. ಓಂ ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೌ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಗಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಥರ್ಟಿ-ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶ್ಲೋಕ. So, we saw how Munis freed from raga, bhaya, etc., etc., Vedaparagaihi, by those who have understood the true meaning of scriptures, they attain the supreme. Yasmat sarva anartha prashama rupatvat advayam shivam abhayam. Since this advaya, this sarva anartha prashama rupatvat, this is of the nature of devoid of all evils, therefore it is advayam, auspicious, shivam, abhayam, fearless. So by these people, by this kind of Mahatmas only this is realized. Therefore, that's what tasmat. So tasmadevam viditvainam advaite yojayet smrutim advaitam samanuprapya jadavallokamācaret. tasmadevam viditvainam advaite yojayet smrutim advaitam samanuprapya jadavallokamācaret. Now atayeva, ataha, therefore, evam viditva, viditva meaning enam advaite smrutim yojayet. Evam viditva, therefore, evam, in this way as mentioned before, that is munibihi Vitaraga bhayakrodadi sarvadoshaihi sarvada munibihi mananashilaihi vivekabihi vedaparagaihi, all that last Bhāṣya, Śloka Bhāṣya. Therefore, evam, in this way, prapanchopashamaha, advayaha, all those things. In this way, evam viditva advaitam smrutim yojayet. So having thus understood in this way about the non-dual nature, अब करना क्या बात में समझने के बाद advaite smrutim yojayet, one should fix their attention, their smriti, their memory, their in Advaita only. Meaning Advaita is there, so one should continuously keep their memory of Advaita, background awareness, everything is Advaitam only, non-dual only. So mind has to be fixed there. One should fix one's memory on non-duality. That is the meaning. Advaite smrutim yojayet. Our smriti, where is no our smriti? Our smriti is only in Dvaita. Lagatar, constantly, our smriti is not on Advaita.
So, one sadhana is constantly remembering. First it starts our memory, then it becomes sadhana, then becomes deeper contemplation, etc. So, Advaite Smritim Yojayet. Beautiful one. Now, Advaita Avagamaya Eva Smritim Kuryat Ityartaha. Meaning what? Advaita Avagamaya Eva. Only for realizing, comprehending the Advaita, the non-dual nature of Paramatma. So, only for comprehending the non-dual nature of Paramatma, Smritim Kuryat iti arthaha. Meaning, one should fix their memory, recollection. Smriti is recollection. So, bar, we must keep on again and again recollecting the nature of Advaita. Smritim yojayet. So, Advaita Vagamaya eva Smritim Kuryat ityartaha. So, for the sake of realization of Advaita, one has to recollect the memory again and again. Tacha Advaitam Avagamya Ahamasmi Param Brahma iti Viditva Ashanayadi Atitam Sakshat Aparokshad Ajam Atmanam Sarvaloka Vyavaharatitvam Viditva. That is the meaning. Viditva means having realized. Advaitam, Tacha Advaitam Avagamya. Avagamya means having realized, having comprehended the true nature of Advaita. Viditva, Tacha Advaitam Avagamya. Then, after first of all comprehending the principle of Advaita, yes, through logic, through reasoning, through Shastra Bala, Yukti Bala, we have come to conclusion that Dvaita Prapancham cannot be justified. Its presence, its existence, we cannot justify. It is only an appearance, superimposition. This we have come to know. So, Advaitam Avagamya, first, perfectly understood, deeply convinced. Iske baad, Viditva, meaning having realized. What is again? Ahamasmi Parabrahma iti Viditva. So, Advaitam Avagamya means Ahamasmi Parabrahma iti Viditva. That is the meaning. Having realized that I am alone Brahman. I am Brahman. This Anubhava, Viditva, firmly concluding, understanding that I am Brahman. Aham Asmi Param Brahma iti Viditva. Having understood, realized, Ashanayadi Atitam Sakshad Parokshad Ajanm Atmanam Viditva. Viditva what? Viditva means having known. Having known what? Ashanayadi Atitam, that which is beyond hunger, etc. Sakshad and Aparokshad, both it is direct and immediate also. Sakshat, direct experience. Aparokshad, immediate, direct, immediate experience. Sarva, Sakshat, Aparokshad, directly and immediately having realized what? Ajam, birthless, Atmanam, and Sarvaloka Vyavaharatitam Atmanam Viditva. And what is another, this one? Sarvaloka Vyavaharatitam. It is beyond all these empirical relation transactions. So, having known the nature, the truth which is of this nature, Sarvaloka Vyavaharatitam, Ajam, Sakshat and Aparokshat, Atmanam, Viditva. How did he know? Not theoretically. Aham Brahma iti. Aham Brahmasmi iti. I am Brahman. The Anubhav. Through that Anubhav, one had realized that which is Ajam, birthless, Sarvaloka Vyavaharatitam, etc., etc. Viditva, having come to know or understood, realized, then Jadavat Lokam Acharet. And how should he behave afterwards? Jadavat Lokam Acharet. Meaning, one should just behave in this world like a Jadavat. Jadavat means what? Like a dull-witted person. Meaning,
Jadavat means not that simply become jada, as a stone. No. Jadavat means one who is not reacting to any of the experiences of the world outside. His mind is not turned outside. Otherwise, honor and praise, or dishonor and honor and dishonor, praise and blame, so many things. जड़वत आचरित, बस जो व्यवहार जैसा करना करेगा, बस इतना ही. Nothing is registered, nothing is creating any agitation in him. He is moving, he is working, but he is beyond all the negative influences, or any other influence of the world. So that way he moves. Jadavat acharayet, lokam acharayet. Meaning what? Aprakhyapayan na atmanam aham evam vidaha iti abhiprayaha. Acharya says, what is Jadavat? Aprakhyapayan. Aprakhyapayan means not advertising oneself. Aprakhyapayan. What way? Aham evam vidaha. I am like this. So without advertising, without people making people know, I am like this. ये मेरा ये है, मेरा वो है, ये है. So because अपना पहचान, this is a दुनियादारी डायलॉग. अपना पहचान होनी चाहिए, अपना एक होना चाहिए. क्या एक पता नहीं, भगवान जाने. लोग हमसे यही बोलते हैं, स्वामी जी अपना एक होना चाहिए. ये क्या पत्थर बोलते हैं कि नहीं व्यवहार में? और अपना पहचान होनी चाहिए दुनिया में. मैं हूँ ऐसा करके लोग जानना चाहिए, मेरा सम्मान करना चाहिए. That's why gurus very interestingly they test. They test totally ignoring you. They don't even look at you. It's a very big test it is. So there is nothing. Aprakhyapayan. But this is the biggest disease that we want to be recognized. We want to be known. We want people to understand us. We want people to know how great we are, how good we are, how sincere we are, how dedicated we are, how important we are in society. Very funny thoughts. But that kind of a kujuli goes off. So that is not there. He works whatever way he wants. Na aprakhyapayan. How? About himself, oneself, not advertising atmanam. Aprakhyapayan atmanam. Na, that is na aprakhyapayan atmanam. Aham evam vidaha. Like that, I am like this. Ita abhiprayaha. So that is the meaning of jadavat acharayet. कोई तारीफ करे, कोई निंदा करे, there is no reaction inside. It's like neither responding to positive nor negative from within. Meaning अपने लिए कुछ भी नहीं. व्यवहार में जो करना है करेंगे. But inside nothing. Just as a small baby, say about 3-year or 4-year-old or 5-year-old, just started talking, blabbering, prattling. And that small children, they come, suppose they praise you and they scold you. Both children, 4-year-old, 5-year-old. What is the impact of that child's praise or child's scolding on mother or parents? If they are intelligent parents.
नो इम्पैक्ट. बिकॉज बच्चा का जो प्रेज होता है, स्तुति, उसमें भी कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है. ना वो कोई निंदा डाले, वो बच्चा है. इनसाइड नो रिएक्शन. यू मे रेस्पॉन्ड, ये देखो कैसा बोल रहा है, बट इनसाइड देयर इज नो रेस्पॉन्स, नो इम्पैक्ट ऑफ इट. समझ में आया एग्जाम्पल? इज इट ओके? Similarly, in the world outside. Beautiful. Jadavat acharayat. That is a beauty. Retaliation, planning, justification, proving something to somebody, feeling sad, remembering that incident forever in life. उस दिन, उस समय, जहाँ पे, वहाँ आपने मुझसे ये बात कही, आपको याद है क्या? जो कहता है उसको क्यों याद रखना है? वो बोलते मुझे याद नहीं है, मेरे को सब याद है. मेरे को सब याद है. तो इंटेलिजेंट, तेरे को सब याद है तो ठीक है, रखो फिर. आई प्रेज योर मेमोरी पावर. आपको याद नहीं है, मैं याद दिलाती हूँ. बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट याद. यू आर नॉट सफरिंग. भूल के तुम खुशी में है, याद दिला के तुमको. दिस इज अनदर दुख. फर्स्ट दुखम इज रिमेंबरिंग. सेकंड दुखम इज वाई अदर मैन इज नॉट रिमेंबरिंग. तो पागलपना है सब. ये सब हट जाएगा. दैट इज कॉल्ड जड़वत आचरेत. ब्यूटिफुल वन. सो अप्रज्ञापयन न आत्मानम अहम एवं विधायित अभिप्रायः कयाचर्यया लोकमाचरेत इति. ओके, बट व्हाट शुड बी द कोड ऑफ कॉन्डक्ट नाउ व्हाइल बिहेविंग और मूविंग इन द वर्ल्ड आउटसाइड? कयाचर्यया लोकमाचरेत. हाउ डज देन जड़वत आचरे? ठीक है, बट देन व्हाट इज दैट कोड ऑफ कॉन्डक्ट? हाउ डज ही बिहेव? हाउ डज निस्तुतेर्निर्नमस्कारो निस्वधाकार एव च चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत्. निस्तुतेर्निर्नमस्कारो निस्वदाकार एव च चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत्. न स्तुति नमस्कारादि सर्वकर्म वर्जितः त्यक्त सर्व बाह्यैषणः प्रतिपन्न परमहंस पारिव्राज्य इति अभिप्रायः. That is the meaning. Meaning first one is stuti namaskara sarva karma varjita. No, giving up all actions. Sarva karma varjita. What is a stuti? Appreciation. Receiving and also spending time in appreciating others. Nor and then greeting. Namaskara stuti, first appreciation, praising somebody. Namaskara, etc. Greeting somebody. So, means what? Stuti is given up, namaskara is given up, meaning what? Sarva karma varjita means tyakta sarva bhakyaishanaha, meaning giving up all external desires. That is the meaning. Yeshana traya is there, no? Vitteshana, Putreshana, Lokeshana. So these three Yeshanas, Yeshana means desires. One is Vitteshana, I want wealth. Lokeshana, name and fame. Putreshana, I want children. So
these three desires, putreshana, vitteshana, lokeshana. Chekta sarva bahya eshanaha. Giving up everything. तो स्तुति नमस्कारा उसमें कोई फंसेगा नहीं है. अब बताइए, if somebody has not greeted you, you feel sad. Somebody has not appreciated you, you feel sad. ये दो बीमारी है ना, receiving appreciation, receiving praise or greetings, this बीमारी से हट जाओ, मजा आएगा. और घर में भी देखो, उन्होंने मुझे ग्रीट नहीं किया, इन्होंने मेरी तारीफ नहीं किया. जो बड़े लोग आए तो आदर करना बेटा, खड़े हो जाओ. Meaning your awareness is only on the external world. We are not talking of dharma and adharma here. याद रखना, ये धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है. He is reveling in his own truth. Other than Advaita Siddhi, he doesn't want anything. तो ये सब पार हो गया. So this is a desire we have. बड़ापन का अहंकार, बड़ापन का जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, आदर मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं. इससे आदमी परेशान हो जाता है. Get freed, how happy you will be. Glamour is a world problem. It's a world problem. Spiritual glamour also is there. So it peeps out, glamour. So this is to be dropped. There's a beautiful one. All this appreciation is gone, greetings are gone, receiving nothing. That state is very not easy. अब घर जाओगे, घर के अंदर प्रवेश करते समय बहू या whatever it is, or son or daughter or grandson or grand, आपसे प्रेम से बात नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, immediately you are disturbed. ये साधना आसान नहीं है, इससे पार करना है. You become freed from all these things. नमस्कार स्वीकार करने का इच्छा. Suppose somebody has that desire, मेरा पैर पकड़ते नहीं कोई, मेरा पैर पढ़ो, उठो, नमस्कार करो. So seeking namaskar from everywhere, from the people around, is another bondage. The biggest thing is, biggest worry for all of us is that people don't know, the people around us don't know how great we are. This is our bimari. हाँ या ना, this should be crossed. This kujili, aprakhyāpayan, that is the meaning. This is called advertisement. आप उससे छुटकारा पाने के लिए प्रयास कीजिए. So this kujali should go. That's why
we remind ourselves of our knowledge, experience. Then we ask people to evaluate us. We ask people to respect us. देखो मैं ज्ञानी हूँ, मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ या सन्यासी हूँ. Honor me. Most of the problems in home, the aged parents versus children, is only this area. उसको अब त्याग दिया ना, इतना खुशी शांति मिलती बाबा. नहीं, ये ऐसा नहीं होना होगा. रेस्पेक्ट करो. छोड़ो यहाँ से अभी से. Even if you have the little thought, drop it and see how free come you free. हाँ, आज मेरा जन्मदिन है, कोई ग्रीटिंग नहीं किया. आज मेरा शायद एनिवर्सरी दिन है, कोई याद नहीं रखता. तो why should others remember your mistake? You are born, your mistake it is for taking birth. Your wedding day, your mistake. Your birthday, your mistake. Why you are born? And asking people to remember you. कैसे है thought? Ramana Maharshi says on the birthday we should cry, not celebrate. He said रोना बैठ के रो. इतने साल हो गया, गुजर गया, कुछ किया नहीं करके. So this is called desire. ये सब, this is why, because our awareness is external. ज़्यादा दुनिया एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर हमारा अवेयरनेस है, एंड ओनली दैट अवेयरनेस पढ़ रही है. बिकॉज ऑफ दैट वी गिव इम्पोर्टेंस टू दीज थिंग्स विच आर एक्चुअली इररिलेवेंट. अरे कोई ना कोई 1-2 महीने के बाद फ़ोन किया समझो आपको, आपने आपके पोता या बेटी या बेटा 2 महीने के बाद किया ना, आप यू आर नॉट हैप्पी विथ इट. 2 महीने के बाद कर रही हो, तो कम से कम तो किया ना. वहां पे भी प्रख्यापन इज गोइंग ऑन. आई वॉन्ट 15 दिन में एक बार किया करो. क्या? फोन करो. हमारा बेवकूफ़ी है बाबा. छुटकारा पाया तो मजा. आपको समझ में आया कि नहीं पता नहीं, ठीक है. सो सर्व बाह्यैषण प्रतिपन्न परमहंस पारिव्राज्य एंड एडॉप्टिंग दिस पारिव्राज्य. प्रतिपन्न, ब्यूटिफुल, हाइएस्ट काइंड ऑफ रेनंसिएशन, परिव्राज. माने किसी से लेने देना भी नहीं है. देखिए, ए मैन हु इज टोटली फ्रीड अलोन कैन मूव इन सोसाइटी. जिसका कोई एजेंडा नहीं है, दैट इज कॉल्ड परिव्राजक. आज यहां पे कितने दिन रहने वाले हो मुझे पता नहीं. क्यों? आपका कुछ शेड्यूल गिड्यूल नहीं है क्या? क्या शेड्यूल है? हमारा दुनिया से करते हुए लेने देने कुछ भी नहीं है. परिव्राजक हो. जब चाहे रहो, जब जाना है जाओ, जब चाहे जहाँ सोना है सो जाओ, जहाँ खाना है वहाँ खाओ, जहाँ भीख मांगना है वहाँ भीख मांगो, जो कपड़ा मिलेगा पहनो. एजेंडा नहीं है. मनी इज नॉट अटैच टू एनीथिंग. दैट स्टेट ऑफ हाइएस्ट रिनंसिएशन इट इज कॉल्ड. That is the thing. Not laziness. हम भी तो वही कर रहे हैं. जब चाहे करो, जब उठना है तो जब उठो तब उठो, जब खाना है तब खाओ, जब सोना है तब सो, जब उठना है तभी उठ रहे हैं हम. तो हम भी परिव्राजक हैं. क्या फर्क है? बट हमारे बद्ध है. वी आर बाउंड, लेजी इट इज.
वहाँ पे द फ्रीडम इज देयर, वी आर बाउंड देयर। जल्दी उठो, स्वामी जी जल्दी क्यों? वाई आर ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम? आप तो कहा कि परिव्राजक बनो, कहीं पे फंसना नहीं, मैं कालातीत हो गया हूँ। तो क्या करोगे? जब मन में ख्याल आता है कि उठना है तो उठूंगा, तो परिव्राजक वृत्ति, कोई किस फंसना नहीं, बस आराम से। दिस इज नॉट द थिंग। प्रतिपन्न परमहंस पारिव्राज्य, परमहंस वृत्ति इट इज कॉल्ड। That is the meaning. Nistuti, nirnamaskaraha, itabhiprayah. Etam vai etam atmanam viditva. Knowing this very self, etam vai etam atmanam viditva, the Brahmanas renounce and lead a mendicant life. That is the full meaning. So this is having realized this, known this, Brahmanas, wise people, renounce and they become mendicants. Tad buddhayaha, tadatmanaha, तन्निष्ठा तत्परायणः इति आद्यादि स्मृतेश्च। इत्यादि श्रुते है, फर्स्ट वन श्रुति एंड सेकंड वन इज स्मृति, भगवद गीता। तद्बुद्धयः, इंटेलेक्ट डिवोटेड टू इट, तदात्मानः, योर सेल्फ इज फिल्ड विद दैट थॉट ओनली, तन्निष्ठा, अबाइडिंग इन दैट ओनली, तत्परायणः, डेडिकेटेड टू इट ओनली, डिवोटेड टू इट ओनली, भगवद गीता। So, ityadi smrtescha. That's beautiful. So, what is the first line of Śloka? He says, Nistutir nirnamaskaraha niswadhakara evacha. Chala achala niketascha. Now, chalam. Chalam means what? Shariram. What is chalam? Shariram. Meaning, pratikshanam anyatha abhavat. Anyatha bhavat. Har kshan, it is changing. Therefore, it is called chalam, meaning chalam is shariram. Why chalam? Which is moving, not changing. Why body is called chalam? Because every moment it is changing. It is becoming something else. Anyatha bhava. Transforming every moment, every second. Therefore, shariram is chalam. What is achalam? Achalam atma tattvam. अब ध्यान से सुनना भी। So, chalam and achalam. Chalam is shariram, achalam is atma tattvam. तो क्या हुआ? Now he says, यदा कदाचित् भोजनादि व्यवहार निमित्तम आकाशवद अचलम स्वरूपम आत्मतत्वम आत्मनः निकेतम आश्रयम आत्मस्थितिम विस्मृत्य अहमिति मन्यते यदा तदा चलः देहो निकेतो यस्य सोयमेव चलाचल निकेतः विद्वान न पुनः बाह्य विषयाश्रयः सच यादृच्छिको भवेत्। दैट इज द मीनिंग। नो यदा कदाचित् भी, यदा कदाचित् व्हेनेवर, यदा कदाचित् मीन्स पर चांस, यदा कदाचित्, हाँ, भोजनादि व्यवहार निमित्तम, भोजनादि व्यवहार निमित्त, ध्यान से सुनना आप। भोजनादि व्यवहार निमित्त माने जब इम्पेल्ड बाय सम हंगर इज देयर तो खाना खाना है। सो इम्पेल्ड बाय सडन नीड, भोजनादि, भोजन करना, नहाना, सो बाय द इम्पेल्ड बाय दोस नीड्स, नीड ईटिंग एटसेट्रा, भोजनादि व्यवहार निमित्तम। हाँ, मोर ओवर देखिए, निमित्तम आकाशवद अचलम स्वरूपम आत्मतत्वम आत्मनः निकेतम आश्रयम आसितम विस्मृत्य। See, one and then afterward, bhojana nimittam, one thinks of himself, oneself, as what? Manyate, I. As oneself as I only. Meaning, limited I. Bhojanadi, what you call nimittam, one thinks of one, sometimes शरीर में इसका शरीर का भान होता है। जब जब कुछ इम्पेल्ड बाय नीड ऑफ ईटिंग फूड और टेकिंग बाथ और एबिलेशन, देन ही बिकम्स, शरीर में शरीर का भान होता है उनको। समझ में आया बात? नहीं तो अदरवाइज हमेशा अद्वैत में रहते हैं। तो
impelled by the need of such eating, and also Vismrutya ahamiti manyate yada. So, I am the things that ahamiti manyate. And one thinks of himself as I, limited I. How? Vismrutya, by forgetting the reality of the self. Atmastitim Vismrutya. कभी कभी आत्मस्थिति जो है, by the self, by forgetting the self, the reality of the self, and impelled by the needs of the body, suddenly he becomes conscious. At that time he thinks, I am I, this little I. So little I. Now then what happens? What is that? What is little, this Atmasthitiam? What is that? Atmasthitiam, Vyavahara Nimittam, Akashavad Achalam Swarupam Atmatattvam Atmanaha Niketam, that is Ashrayam, Atmasthitiam Vismrutya. That state of reality, which is what? Which is, what do you call it? Niketa, support. See? Akashavad Achalam is like a space, not changing. Like Akashavad, like a space, it is not changing, unchanging. Unchanging, like space, that's real support, the Atma Tattva, which is a support, Ashraya, which is like an abode, one's own abode, Niketam, and also one whose nature is like Akashavat, like space, changeless, such Atma Tattvam, which is abode, real abode, which is like Akasha, changeless. One support it is, Ashraya, Atma Tattva. ऐसा आत्म तत्व को भूलकर विस्मृत्य, आत्मस्थितिम विस्मृत्य, ऐसी स्थिति जो है उसको भूलकर, जो है whenever perchance यदा कदा भोजनादि निमित्तम, भोजन करने के लिए या नहीं तो नहाने के लिए या नहीं तो whatever it is, ablutions के लिए, when शरीर का भान हो गया, तब विस्मृत्य, forgetting the reality of the self. How? What is the nature of reality? Which is like Akasha, which is Ashraya, which is a support also, which is Niketa, Nilayam, Ashrayam, everything. Vismrutya, Atmasitam Vismrutya, Ahamiti Manyate Yada, Tada, then. That is the meaning. So, कभी कभी भूल जाता है शरीर का भान आना, भोजन के लिए, इसके लिए, then he becomes identified with Chalam. Niketa. See, Mahatma के लिए two ashrayas are pointed out here. So, what is abode? Chala, achala abode. हमेशा आत्म तत्व में ही रहते हैं, अचलम में ही. बट जब शरीर की अवस्था, आप कुछ चाहिए, खाना चाहिए, एब्ल्यूशंस है, नहाना है, कुछ रिक्वायरमेंट इज देयर, देन एट दैट टाइम फॉर हिम द बॉडी बिकम्स सपोर्ट, निकेत. It means what? This Mahatma, the realized Mahatma, he becomes aware of his body only whenever it is required. Otherwise, all the time, he is in that state of Brahman only. See, tada chalo deho niketaha. Meaning, at that time, this chalaha, dehaha niketaha, this body becomes his support. When he becomes conscious of the body, impelled by requirements such as eating, etc., he becomes aware of this physical body. That time he forgets higher nature, Vismrutya, and he thinks I am a little I am this, the body. That time, requirement के हिसाब से, what is Niketa for him, support for him, Ashraya for him, body. Chalo dehaha niketaha yasya. Beautiful. Yasya saha ayamevam chala chalo niketaha vidwan. So vidwan, wise man ka, what is the abode? Chala and achala. Sometimes chala, sometimes maximum time achalam only. कभी कभी शरीर का बान हुआ तो शरीर को जगाना, नहाना, नहलाना, ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? मैं नहा रहा हूँ, मैं खाया, ना खिलाना, नहलाना,
शरीर को कपड़ा पहनना, तब शरीर का आश्रय हो गया, निकेत, चलो हो गया। अदरवाइज तो लैंग्वेज में फर्क मिला कि नहीं आपको? ये इन दिस स्टेट ओनली यू मस्ट लिव, दैट आई एम वेकिंग माई बॉडी अप फ्रॉम द बेड, आई एम टेकिंग द बॉडी टू द बाथरूम, आई एम टेकिंग द बॉडी टू द डाइनिंग हॉल, चलो बेटा डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ तुझे। ये भी अभ्यास करो, मजा आएगा आपको। You start feeling the ties with the body gets loosened. अब अपने आप को शरीर समझ के मैं उठ रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं, that is our feeling. करो करो। ऐसा साधना करने से 24 आवर्स यू आर इन मेडिटेशन ओनली। अद्वैते स्मृतिम योजयेत। सो यस्य स्वयमेव चलाचलो निकेतः विद्वान न पुनः बाह्य विषयाश्रयः। कभी कभी द मैन ऑफ इल्यूमिनेशन विद्वान चलाचल निकेतः मीनिंग कभी चेंजिंग एंड अनचेंजिंग, निकेत सपोर्ट है उनको। चला मीन्स चेंजिंग, नो, कभी दिस चेंजिंग बॉडी बिकम सपोर्ट, कभी अनचेंजिंग द आत्म तत्व। चलाचलो निकेतः यस्य स्वयमेव चलाचलो निकेतः। फॉर हुम? विद्वान के लिए। फॉर ए विद्वान के लिए दिस बिकम्स टू अबोर्ड्स, चल निकेतः अचल निकेतः। सो अयमेवं चलाचल निकेतः विद्वान न पुनः बाह्य विषयाश्रयः। And you know, he is not depending again on external objects. But he is in the state of reality. So, but, so I saw, yasya ayamevam chalachala niketah vidvat na punah bhaya vishayashrayah. And it is not meant for that person, other person, whose attention is occupied by external objects, or whose attention is outwardly turned. One who is taking support of external objects, उनके लिए ये लागू नहीं है, बाह्य विषयाश्रयः. And therefore, he says yadruchiko bhavet. And such a person, vidwan, should become yadruchika. Yadruchika means what? Depending on circumstances, जो by chance जो मिलता है, यादृच्छिका. यदृच्छालावसंतुष्टः, यादृच्छिकम, यदृच्छा, by chance, per chance. So such a yadruchiko bhavet, meaning what? He should become dependent only on circumstances. Whatever time gives him, per chance whatever he gets, he depends on that. Yadruchiko bhavet. Meaning what? Yadruchiko bhavet means what? Acharya says, yadrucha praptaha, per chance jo milta hai, by chance. Such as kaupina, achadana, grasamatra, dehasthiti ityartaha. By chance, whatever he gets, kaupina, a strip of cloth he gets. By chance. Achadanam, some covering, shelter मिल जाता है कभी कभी. Per chance, by chance. And grasa, food. कहीं पेड़ मिला, सो गया, शेल्टर मिल गया. गुफा मिली तो सो गया अंदर ही जाके. They're absolutely free. So, kaupena achadana grasamatra dehasthiti ityartaha. So, only for the maintaining of the body, he follows this kind of a thing, schedule. So, whatever food comes to him, coverings come to him, he accepts it
for the maintenance of the body. Yadrichiko bhavet. See? Ityartaha. So, Chala Achala Niketa. Plus, what did we see today? What is Sannyas? Nistutihi, Nirnamaskaro, Niswadhakara Yevacha. So, Tattvamadhyatmikam društva Tattvam društva tu bāhyataha Tattvi bhutastada ramaha Tattvada prachuto bhavet Tattvamadhyatmikam društva Tattvam društva tu bāhyataha Tattvi bhutastada ramaha Tattvada prachuto bhavet Tasmat Tada ramaha Tattvada prachuto bhavet. This we can see tomorrow. One more shloka is there. Wonderful shloka. With this we will be completing by tomorrow Vaitathya Prakaraṇa. बाद में अद्वैत प्रकरण आएंगे. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. सद्गुरुनाथ महाराज की जय.